So in the last lecture, we have started geometry of linear programming problem. That means you will need some basic concept that we have started first. The linear combination of m numbers. Linear combination means if you have x1, x2, xm, that are your m numbers that are belonging to your real line, then the linear combination will be nothing but that will be a1 x1 plus a2 x2 plus am xm. And that we have extended the definition that if my numbers are belonging to Rn, that is n dimensional. So my number will be of the thing x11, that it is coming from the first number. So I have written 1 with these numbers, and x2 is coming from the second number. So I have written 2 here, and xm is coming from the mth number. So I have written m over here. And all these numbers are belonging to your Rn plane. So that means total number इसमें कितने होंगे n. So that means the linear combination is a1 x1, that you can write a1 x1 plus a2 x2 and this plus am xm, and just you have taken the value of am, and in this case ai's will belong to your real number. So next we have started, this was the linear combination. So when you are talking about convex linear combination, the linear combination where your ai's take the particular values that the sum of the values should be 1 and all the values should be greater than equal to 0, then you say that is your convex linear combination. So I have given you example कि अगर मैंने x1 2 3 लिया और x2 4 minus 7 लिया and I have scalars over here 2 and minus 7.2, यहाँ पे मेरा a1 2 है और a2 minus 7.2 है जो रियल नंबर्स हैं. दैट मीन्स ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है, बट दिस इज नॉट माई CLC. क्यों? क्योंकि मेरे a1 और a2 दोनों क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which condition is not satisfying here. So that means this is not my CLC. On the other hand, if I am taking a1 as 1 by 3, a2 as 2 by 3, so the sum if you take, now my one condition is satisfied that my a1 and a2 both are greater than equal to 0. And the second condition should also true that a1 plus a2 should also be 1. So you can verify that a1 is your 1 by 3 and a2 is your 2 by 3. So if you sum up these, then the answer will be 1. It is not, it is only about two numbers. So the same way if I am taking x1, x2, xn are any numbers that can belong to any plane. अभी के लिए अभी आप R2 ही करो. If they are belonging to your R2 plane, you will say it is the convex linear combination means a1 into x1 plus a2 into x2 plus an xn will be your convex linear combination if a1 plus a2 plus an, that means the sum of ai's should be 1 and your all ai's are greater than equal to 0. So this is the CLC of n numbers. The same you can take x1. अब यहाँ पे आपका किस तरीके का है? The capital X I am taking कि जो आपका नंबर है, the small x I am taking जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर. ये x1 अगर R2 को बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स दिस इज द टू टपल सेट x1 और x2. इट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर, सो आई एम राइटिंग 1 विद दिस. x2 आपका कैसा होगा? x1 x2 क्योंकि आपका R2 को बिलोंग कर रहा है. So it is coming from the second number, so I am writing 2 and the same way this thing, right? So whatever your ai's will be, it should, the sum should be 1 and all the numbers should be greater than equal to 0. So that will be the CLC if your xi's are belonging to
XM ले लेती हूँ, are belonging to your Rn plane, then A1 x1 plus A2 x2 plus AM xm is CLC of x1 x2 xm if the sum of the AIs should be 1 and all the AIs should be greater than equal to 0. अब यहाँ पे अंदर वाला नंबर कैसा है? That is your n tuple set कि मेरा नंबर कैसा रह रहा है? That will be your A1. n numbers हैं उसमें xn और फर्स्ट में से आ रहा है, so I am writing 1 with the subscript A2. This will be your x2, sorry, x1, x2, xn. It is coming from the second number, so I am writing 2 with the simplicity, and I am taking AM. My mth number will be x1, x2, xn, and it will be my m with this because this is my mth number. So this will be CLC अगर मेरा AIs का सम क्या होगा 1 और AIs मेरे सारे क्या होंगे greater than equal to 0. Is the definition of CLC is clear? So this is very important concept, right? Next, we are taking the convex set. You say a set is convex. A set I am naming as is convex if and only if the CLC of every 2 points of S will belongs to S. So this is the definition of theoretically of convex set. कॉन्वेक्स सेट क्या कह रहा है? वो वाला सेट मेरा कॉन्वेक्स सेट है अगर मैं उस सेट में से 2 पॉइंट्स लूं और उनका सीएलसी लूं, वो सीएलसी भी उस सेट में जाना चाहिए. इज इट क्लियर? सो मैथमेटिकली हाउ यू विल चेक? मैथमेटिकली इट मीन्स कि इफ यू आर टेकिंग 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू S और x1 और x2 की कुछ भी डायमेंशन हो सकती है, that it can be real number, R2 plane, R3 और R4 and Rn. x1 अगर x2 आपने S से लिए, अगर आपका CLC भी S को बिलोंग कर रहा है विद द कंडीशन कि A1 प्लस A2 1 रहे एंड A1 एंड A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है, then you will say your set S is convex, right? In other some of the books, because you are taking 2 numbers and the sum should be 1, so one can depict from here that A2 is nothing but 1 minus A. So some books write like this: A into x1 plus 1 minus A into x2, that should belong to S. That has the same meanings, and here you should have condition that A should be greater than equal to 0. Right? So the other number will automatically depend on your this number, right? A and 1 minus A will be taken greater to be 0, and 1 minus A should be greater than equal to 0. So your A should lie between 0 and 1, right? So this is the mathematical definition. How you can check graphically? This is very important, right? Because sometimes it is not easy to check mathematically. What we say in graphically हम क्या करेंगे कि हम we will draw the region of S, जो भी मेरा region बन रहा है इसका, take 2 points from S, join them by a line. If line remains in S, then set S is convex.
otherwise it is not convex. So how you can take, so the example, suppose I am taking S, the set of x1 and x2 means I am taking x1 minus a whole square plus x2 minus b whole square and is equal to r square is my this set. Check whether it is convex or not. So you can clearly see x1 and x2 means you are on R2 plane. x2 can be your x-axis and y-axis. ये क्या equation है? So this represents your circle, right? वो वाला सर्कल जिसका सेंटर A और B है और उसकी रेडियस कितनी है? R. वो क्या कह रहा है, अब S में मेरे कौन से पॉइंट हैं जहां पे मेरी कंडीशन x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है. दैट मीन्स वो वाले पॉइंट्स जो मेरे बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं वही कंडीशन ट्रू करेंगे ना सिर्फ. ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ x1 and x2 which satisfy this condition that x1 minus a greater than equal square plus x2 minus b square equal to r square. तो कौन से पॉइंट्स होंगे x1 और x2 के जो आपके बाउंड्री पे लाई करेंगे या जो आपके सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे. अगर आप डेफिनेशन लगाओ ग्राफिकली चेक करने की, मैंने क्या कहा कि दो पॉइंट्स ले लो एस में से. दो पॉइंट्स मैंने यहां ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया. आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स, ज्वाइन देम बाय अ लाइन. ये मैंने लाइन से ज्वाइन कर दिए. क्या ये लाइन एस में रह रही है? ये जो आपका पोर्शन आ रहा है क्या ये एस में है? एस में आपके कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ सर्कमफेरेंस पे हैं? क्या आपकी लाइन सर्कमफेरेंस पे है? यू आर सेइंग इफ अ लाइन रिमेन्स इन एस, पूरी की पूरी लाइन एस में रहनी चाहिए, नॉट ओनली 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम एस, वो तो आपने एस में से लिए ही हैं, वो तो एस में ही रहेंगे. द होल लाइन शुड रिमेन इन एस. क्या ये पूरी लाइन एस में रह रही है? नो, दैट मीन्स क्लियरली इट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट. Similarly, if I just change this definition, if I am considering the same set but with the condition that x1 minus a whole square plus x2 minus b whole square less than equal to r square, then again it represents still it represents your circle, but now it includes all the points which lying on the circumference plus the inner points as well. Now this is your S region. यही है ना वो वाला रीजन जो आपकी बाउंड्री को इंक्लूड करे और सारे ही अंदर वाले पॉइंट्स ले. So this is your region S. Now if you take any 2 points on S and I join them by a line, is it remaining in S? कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, मैं यहां पे भी ले लूं, then it remains in S. So that means S is convex set. Is it clear? Even if you remove that the restriction less than that it less than r square, still it will remain your convex set. क्योंकि आपको अपने बाउंड्री वाले पॉइंट्स लेने ही नहीं है, आपको सिर्फ इनर पोर्शन वाले पॉइंट्स लेने हैं. दैट मीन्स जितना मर्जी आप पास चले जाओ बट बाउंड्री इंक्लूड नहीं करनी. तो आप कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लो, that you take 1 point here, 1 point even in near the boundary, you can join them by a line और वो आपका S में ही रहेगी लाइन. So even in that case
your S is convex. Just if I change this, the whole set frame S, and this is condition, and I am taking greater than equal to R square. So what will be the region of S? Outside the circle. The same x1 and x2, and they are belonging to your R2 plane and your x1 and x2 real numbers. So that can be circle anywhere. And here your x1, x2, a and b, they are all are belonging to real numbers. So now greater than equal to R square means what is your region? Outside the circle. Now if I take 1 point here, 1 point here, रह रहा है इसमें? Convex है? नहीं है. For every 2 points, it should remain in S. Is it in region? No. That's why S is not convex. ठीक है? So you have not to check only for 2 points. It should be for every point. So if you are taking points on one side, it will remain. But if you take 1 point this side and the other point on this side, you can only join them via line, and that line will not come to your S region. So that's why it is not your convex set. So this is the simple way to check that the set is convex or not, right? Or you can say the question that you have S, all those points of x1 and x2 such that mod of x1 plus mod of x2 less than equal to 1. So if you plot its region, these are nothing but आपकी lines ही हैं. So this will be your rhombus. Because you are saying the inner region, so that means all the points here, this is your region S. To check is this convex or not, you can take 2 points anywhere. If you can join them by a line, then that set is your convex set. Is it clear? So this is my convex set. Even if I give you any graph or any figure or any, suppose I am plotting this, right? And this is my feasible region. If you want to check is this convex or not, can you check? How you will check? Take 1 point here, जहां पे आपके cases contradict हो सकते हैं. You can join them via line. So I can take 1 point here and 1 point here. If I join them by a line, this line is not in my S. So this is not convex set. Is it clear? Yes or no? Next, the definition of extreme points or vertex. A point P of convex set S is an extreme point if it cannot be written as CLC of other 2 points of S. So you say your any point is a vertex or extreme point if you cannot write that point as a CLC of other 2 points that you have to take from S. So that means पहले तो जो आपने P point लेना है,
वो आपने कॉन्वेक्स सेट में से लेना है, राइट? अगर आपका सेट कॉन्वेक्स नहीं है देन यू कैन नॉट से अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट और एनी पॉइंट, बट अगर आपका सेट कॉन्वेक्स है देन यू आर टेकिंग दैट P इज अ पॉइंट, इज दैट पॉइंट जिसको आप किसी दो पॉइंट्स और दूसरे पॉइंट के CLC में नहीं लिख सको. So graphically how you can check कि if you have taken one point is considered and we are not able to pass a line from P, then P will be your extreme point. For example, the same I have considered a triangle and I am considering the inner portion of this. You all know, we study always that triangle has three vertices. Why triangle has three vertices? This is the reason. क्योंकि आप ये बोल रहे हो these are my vertices A, B and C. ये क्यों vertices हैं? क्योंकि आप A, B, C को किसी और दो पॉइंट्स के CLC में लिख ही नहीं सकते. मतलब आप कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो आपकी A में से पास हो जाए. ठीक है? जैसे अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये पॉइंट है P, चेक करना है कि ये एक्सट्रीम है या नहीं. क्या मैं अपने पॉइंट्स ऐसे ले सकती हूँ, वन पॉइंट हेयर वन पॉइंट हेयर? ये लाइन मेरी P में से ही पास करगी. That's why P is not extreme point here. Is it clear? That's why this point is not extreme point. इसीलिए ही आपका A पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट आपने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट कहाँ लोगे? वो A itself नहीं होना चाहिए. The line should pass through from P, A, point A. A में से ऐसी कोई लाइन है जो पास कर जाए और S में ही रहे? No. That's why it has three extreme points. You say the triangle has three vertices. This is the reason that we say that these, जो हम शुरू से पढ़ते हैं, a three-sided figure, so that has three vertices that you take. That's why A, B, C are extreme points, or you can say vertices. Here if you take any point, जो मैंने अंदर वाला कोई पॉइंट ले लिया P, क्या ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है? No. Why? Because I can take a line which can pass through from P. That's why it has only 3 points. The same, the example which we have considered above, the same we will do. S जो हमने पहला पॉइंट लिया था कि that the points are lying on your circumference, वो convex ही नहीं था. So that means we cannot check about the extreme points. But if we are checking x1 and x2, the region which we have done x1 minus a whole square, x2 minus b whole square less than equal to r square. So what is this? This was my convex set, right? And this was the region. यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं? सारे कौन से? बोलो ना, ये सारे तो इनसाइड वाले भी हैं. ठीक है? So that means here what are your points? All those points that are lying on the circumference of the circle. So all points lying on circumference are extreme points. So you can notice from here also that extreme points can be infinite, right? So in this case, you have infinite points, extreme points. The same region if I consider
The same reason if I consider, if I exclude this sign less than r square, so can you tell me what will be my extreme points? A circle, it should be just touching the circumference of the circle. If you are saying like this, कहां तक लिमिट लगाओगे? कितनी पास पॉइंट ड्रॉ करूं जो आप कह रहे हो एक्सट्रीम? यहां ले लो, बिल्कुल पास। मैंने एक और ऐसा पॉइंट ले लिया, इसी के पास ऐसे के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी। That what you are saying, if you have to take points from the circle, you have to restrict its region, but S point, S तो सिर्फ कह रहा है बाउंड्री मुझे लेनी ही नहीं है। सारे वो पॉइंट्स जो जितने भी बाउंड्री के पास जाते जाएं, चाहे आपकी रेडियस 4 है, आपने कहा 3.99999 तक ले लो, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 2 पॉइंट ले लो, एक 3.999999995, एक पॉइंट ले लो 3.9999998, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन करूं, देन 3.999 also will pass through from this. So in this case you have no extreme points. You saying it tends to, but I am giving you example that it is the region which is less than r square. How much you can restrict it so that it should remain close 4? Close 4 तो 3.5 भी है number. But we are saying that 2 points, that if I can pass a line from that that point, then it is not my extreme point. So the same, now you will tell me, if I have a region S, right, I am taking a point X. So if I have this thing, this is my convex set. आप रियल लाइन पे रह रहे हो, रियल लाइन में आप कह रहे हो वो वाले x जो मेरे 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? I am taking 2 points. ठीक है, so is it convex set? If it is convex set, can you tell me what will be the extreme points? 0 and 1 in this case are my extreme points. If I change just, this is still a convex set, but my extreme point is only 0. Because 1 you cannot take. From 1 nearby 1, you can take any nearby values that can pass through that point. The same if I exclude this and include this, I have extreme point in that case will be 1. If I exclude both, then no extreme points. If we have, you are taking a point actually from the convex set. The set itself should be convex. Then you are talking about convex. That what I have told you कि जो आपने point P लेना है वो convex set का होना चाहिए. Second and third, yes, they are convex sets. ये वाला point है, that means I have this line 0 and 1. Boundary exclude करनी है और ये सारे points लेने हैं. Fine. So this, in this case, you have no extreme points. Is it clear? Yes or no? Yes. Yeah. Next, we are talking about that you have already studied equation of a plane. What is equation of a plane? ax plus by plus cz is equal to d. That means जो आप नंबर की बात कर रहे हो वो आपका R3 प्लेन में है. That means you are in third
3 डायमेंशन जिसमें आप पहला कोऑर्डिनेट कह रहे हो x, y एंड z, एंड द सेम वे वी आर डिफाइनिंग x1, x2, x3 जो आपके R3 में से ही आ रहे हैं, और x1, x2, x3 मेरे क्या है, रियल नंबर. सो यू से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मीन्स a into x1 plus b into x2 plus c into x3, that should be equal to your d, right? Similarly I can write this a b c जो आपके कोई स्केलर्स ही हैं, I can write it like a1 x1 plus b1 x1 जो हमने CLC की डेफिनेशन, a2 x2 plus a3 x3, still it is equation of प्लेन. 3 डायमेंशन पे ही हो, a1 a2 a3 आपके स्केलर्स हैं, d कोई आपका स्केलर है, that you are saying that you are remaining in the 3D, you are saying that it is your equation of plane. Understand the difference between the previous convex linear combination and here is, जब मैं convex linear combination ले रही थी तो मैं कैपिटल वाले x लेके चल रही थी. Here I am writing the inner elements of x when I am writing equation of a plane. Are you getting the point? जब मैं कह रही हूँ x1 मेरा 1, 2, 3 है, ठीक है, तब मैं कह रही हूँ a1 into 1, 2, 3 plus a2 into this thing. Then I was talking about CLC. बट जब मैं ये वाली कह रही हूँ, मैं आपके इनर वाले पॉइंट्स लेके चल रही हूँ. दैट मीन्स x1 अगर आपका इस तरीके का है, so that what I am writing a1 x1, a2 x2, a3 x3. So this is your equation of plane. When you extend your x to n dimension, then you will say that will become your equation of hyperplane. Equation of hyperplane means when your x will belonging to your Rn, then x आपका कैसा होगा, x1, x2, इस तरीके का आपका x होगा. Equation of a hyperplane means you are writing a1 into x1 plus a2 into x2, an xn, that will be equal to your number d. This is your equation of hyperplane when you have extended your definition from 3-dimensional to 4-dimensional, 5-dimensional, 7-dimensional and 8-dimension. Is it clear? Yes or no? Yes. So the same can I write like this, a1, a2, an, and this I can write as x1, x2, xn, and this is equal to d. So this I can say this is my A matrix and this is my X matrix. So this is my AX is equal to D, right? So now when we have discussed equation of hyperplane, then I am writing set of hyperplane. Set of hyperplanes means all those points of X किसी भी डायमेंशन को वो बिलोंग करें एक्सेप्ट x R3, सच दैट ax आपका किसके इक्वल हो, d के. जो आपने किया जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे कंस्ट्रेंट्स, करा था ना, पहला कंस्ट्रेंट इक्वल टू b1, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वल टू b2, थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वल टू b3. वी हैव डन दिस. दैट मीन्स व्हाट यू हैव रिटन एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन्स, जहां पे आपके a1, a2, an स्केलर्स थे, इस तरीके से ही लिख रहे थे ना, 2x1 plus 2x2 plus 3x3 plus s1 is equal to 4, यही लिखा. यहाँ पे ये क्या है, a1, a2, a3 and this is my a4 जो 1 मल्टीप्लाई है, x1, x2, x3, x4. दैट मीन्स ये नंबर किस पे जा रहे हैं, R4 प्लेन पे, अगर आपके 4 ही वेरिएबल्स थे. So that means the constraints that you write in your standard form that represent nothing, that is the equation of your hyperplane. Is it clear? Next, equation of closed half spaces.
Equation of closed half spaces means that you are writing, you are taking x's belonging to your Rn. It can be anything. A1 x1 plus A2 x2. An xn less than equal to D. Then you say that this is your equation of closed half space, or you can also say greater than equal to D. It can be any combination. So equation of closed half spaces, I can write either Ax should be less than equal to D or Ax should be greater than equal to D. So when I am talking about set of closed half spaces, set of closed half spaces, that means I am writing all those x such that either Ax should be less than equal to D or all those x such that Ax is greater than equal to D. So that means जो आपको गिवन फॉर्म होती थी, लाइक मैंने दिया होता था ना 2x1 plus 3x2 plus 5x3 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है. 3x1 plus 4x2 minus 5x3 less than equal to 19 or greater than, that represent nothing but that are your actually closed half spaces, right? And that be strictly less than D in any case. That I am going to discuss. When you are talking about less than, then that represent equation of open half spaces. Equation of open half spaces, that you take your axis belonging to your Rn plane, and n can be anything, 2-dimensional, 3, 4, anything in which dimension you are. If you are writing Ax strictly less than D or your Ax is greater than D, then this is your set of open half spaces. All those x such that Ax either it should be less or it should be greater, that represents set of open half spaces. Now, when we have done feasible solution, feasible solution हमने पढ़ा ना, क्या होता है? वो वाला solution जो आपके constraints को satisfy कराए, चाहे वो equal to form में हो, चाहे वो less than के form में हो. अगर आप set of feasible solution की बात करो, what will it indicate? वो वाला set मतलब वो वाले x point जहां पे मेरे कंस्ट्रेंट अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहे हो, दैट इट शुड सेटिस्फाई Ax इक्वल टू D, और वी कैन डिसाइड राइट हैंड साइड B, एंड योर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यही होता है फिजिबल सोल्यूशन. वो वाले पॉइंट्स जो मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स में किस में लेते थी, A मैट्रिक्स में, कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कराएं मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल रहे, देन दैट फॉर्म्स योर सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन. Next, set of optimal solutions. All those points of x जो आपके सारे फिजिबल भी हो, प्लस अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करो तो या तो वो आपको दिस p इज आइदर मैक्सिमम और minimum value that it should give, then that point you will say that are your optimal solution. So all those sets which you have written over here means all these sets, and I have written these sets,
These are nothing but these all are convex sets, right? अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और सीएलसी चेक कर रहे थे, दैट वी हैव टेकन कि हमने 2 पॉइंट्स ले लिया. अब मेरे सेट में तो पॉइंट्स हैं. हाउ वी शुड गो टू चेक द कॉन्वेक्स सेट? मैं कह रही हूँ सारे हैं. अगर आई वॉन्ट टू चेक set of closed half spaces is convex or not, how you will proceed? So the mathematical definition you will apply that you take 2 points x1 and x2 belongs to S, उसका CLC लो. If और CLC भी S को belong कर रहा है, then you will say that set is your convex set. The same you can do for all. मैं आपको एक कोई केस करके बता देती हूँ, बता दो कौन सा केस करूं. All these are convex set. The similar way you will prove. The set you are saying S is a set x1 any x such that ax is less than d. So this is convex set. कैसे करना है? You have to take 2 points from the S, x1 and x2. आपको दोनों S में से लेके चलने हैं. अगर S में से लेके चलने हैं तो x1 का नेचर कैसा है कि ax1 भी मेरा लेस देन b होगा एंड ax2 भी मेरा किससे लेस होगा? d से लेस होगा. How you will write the CLC of these 2 points? a1 x1 plus a2 x2 means ये आपका CLC हो गया सच दैट यहाँ पे कंडीशन है कि a1 और a2 सम 1 एंड a1 और a2 दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है. अगर ये CLC मुझे S में बिलोंग करवाना है तो मतलब इसके तरीके का होना चाहिए. मैंने कह दिया ये नया पॉइंट ले लिया मैंने y है. अब अल्टीमेटली क्या बिलोंग कराना है? आई हैव टू प्रूव दैट y इज बिलोंगिंग टू S. y S में कब जाएगा? जब a y किससे छोटा होगा? d से. अगर ये मेरी डेफिनेशन ट्रू हो जाती है देन मेरा y किस में चला जाएगा? S में. ठीक है, d में नहीं S में. ठीक है. So when you are writing a into y and y is nothing but a1 into x1 plus a2 into x2 and now you are multiplying. a1 is a scalar. मैं ऐसे लिख सकती हूँ a into a1 x1. मैट्रिक्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे. a1 is scalar. Can I take out from the matrix? ठीक है. a1 I can write this as ax1, a2 ax2. अब x1 पॉइंट कहां से आ रहा था? So ax1 is less than d, that means this point is less than d. ax2 is less than d, that means this point is also less than d. Can I take d common? a1 plus a2 क्या लेके चल रहे हो? सम कितना है उनका? 1. तो ये किसके इक्वल आ गया? d के, which implies your ay is less than d, which says कि y आपका s में चला गया और y आपका कुछ नहीं था, that was a1 x1 plus a2 x2 is also belonging to your S. Is it clear? So your set S is convex set. Thank you.